30 मिनट्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी एंड आई एम गोना शो यू कि आगे क्या निकलता है नतीजा इस बात का. थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग अगेन. थैंक यू. आई होप कि दिस गेट्स बेटर. इंटरेस्ट रेट पॉज है. हाँ, मोस्ट लाइकली इंटरेस्ट रेट पॉज हो जाएगा. दैट्स व्हाट 96% मार्केट ने फैक्टर इन किया हुआ है. हाउएवर दैट्स नॉट द थिंग. द थिंग इज कि क्या अगर फेड जो है कोई ऐसी बात कहते तो उसकी कोई ऐसी होकिश टोन होती है जहाँ पे, जिसको होकिश पॉज कहेंगे, जहाँ पे वो ये कहेगा कि जुलाई में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो देन मार्केट विल टैंक. कैसा होता है, क्या होता है. थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग. फाइनली वकास, थैंक यू. जी सलाम. कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक ठाक. आप बताइए, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह. यार पहले ज्वाइन नहीं हो रहा था. आई नो. ठीक. क्या कर रही हैं आप बिटकॉइन के साथ? आप बताओ क्या करूं. मैं इन लोगों से पूछी, मुझे बताओ पंप कराना है, डंप कराना है. मैं तो डंप कराऊंगी. हम लोग की 2 शॉट्स ओपन है, तो डंप कराएं इसको. डंप कराते हैं. क्या ख्याल है? मजाक कर रहे हैं हम लोग, विच इज जोकिंग. हम लोग ऐसे कुछ भी नहीं करते. थैंक यू राहुल चोपड़ा फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू अली टाइगर फॉर द रोज. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस. लाइक करो मेरी लाइव को. कीप टैपिंग द स्क्रीन, डबल टैपिंग द स्क्रीन. कीप शेयरिंग द लाइव. तो what I'm trying to do is we are trying to cover FOMC meeting, जो कि अभी से 30 मिनट्स में होने वाली है. 32 मिनट्स में जेरोम विल स्टार्ट. मेरी भी शॉर्ट है. लुबन कौन सी शॉर्ट किया आपने? हम लोग तो अल्फा और लीना की शॉर्ट में, और सुबह से लगे हुए स्ट्रेट पे पीछे. सुबह से 2 ट्रेड के पीछे, पूरा सुबह से रात हो गई है ना, शाम हो गई है. कल रात को टोमो दिया था, वो तो सुबह उठने से पहले टीपी हिट हो गया था ना. टीपी हिट हो गया था. डोमो वाज ब्यूटीफुल. डोमो वाज ब्यूटीफुल. अल्फा और लीना ने पता नहीं क्या करना है. ये बिटकॉइन डंप हो ही चले जाएंगे अभी. वैसे भी आई डोंट थिंक इनके अंदर इतना जूस है नहीं. आई डोंट थिंक सो आइदर. आई डोंट थिंक सो कि ये लोगों ने कुछ कर सके. आई डोंट थिंक इतना कोई टेंशन होगी. नहीं, नॉट मी आइदर. अगर कोई प्रीमियम के मेंबर्स हैं तो उनको थोड़ी तसल्ली हो जाए. उनको भी तसल्ली हो जाए. क्या चांसेस हैं? यार मेरे ख्याल से बिटकॉइन विल डिप, बिकॉज फेड ने वो कहते हैं ना, फेड ने कोई ना कोई चबली जरूर मारनी है, और जरूर चबली मारेगा. कहते हैं ना, बाय द रूमर सेल द न्यूज. ठीक है ना. तो मेरे ख्याल में इन्होंने लास्ट मंथ से भी बोला था कि इंटरेस्ट रेट फ्रीज करेंगे. तो आई थिंक वो सबको पता है इंटरेस्ट रेट फ्रीज होने वाले हैं. Exactly, that's what they're saying कि 90 seconds में आने वाला है डेटा. what they are saying कि 96% तो मार्केट ने इस बात को फैक्टर इन किया हुआ, एक पॉज हो जाएगा. तो पॉज होना कोई कमाल की बात नहीं है. पॉज का सबको पता है. इट्स नॉट अबाउट द पॉज, इट्स अबाउट द नेक्स्ट मूव ऑफ द मार्केट. और फेड वुड मोस्ट लाइकली ही विल बी हॉकिश. इट विल बी अ हॉकिश पॉज, यानी कि वो जरूर इंडिकेट कर देगा कि जी जुलाई में इंटरेस्ट रेट दोबारा से बढ़ेंगे. एंड इट शुड, बिकॉज उनकी इन्फ्लेशन, बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट द हेडलाइन सीपीआई. सॉरी, दे डोंट केयर अबाउट द कोर सीपीआई. दे केयर अबाउट द कोर सीपीआई, विच इज क्वाइट हाई, विच इज स्टिल क्वाइट हाई. जो लोग समझ रहे हैं कि एसएनपी और क्रिप्टो मार्केट इज कोरिलेटेड, फिलहाल इट्स डीकपलिंग, और मार्केट अब नीचे होना शुरू हो गई है. Bitcoin is going to go down, I think so. Thank you guys for joining. Thank you for following me. Funny Fanky, thank you for joining me. आपका नाम बड़ा मजे का है. Funny Fanky 1745 से शॉर्ट किया हुआ है. किसको? ईद को शॉर्ट कर रहे हो तुम? किसको शॉर्ट कर रहे हो 1745 से? मैं तो ईद को आज देख ही नहीं रही हूँ. मैं बिटकॉइन ईद को, आई एम नॉट ट्रेडिंग ईद को, बिटकॉइन इन ईद these days at all. मैं स्कैल्पिंग भी नहीं कर रही उसके ऊपर, बिकॉज इट्स वेरी वेरी वॉलेटाइल. So no change. Okay. Rates left unchanged as expected. USD bit stronger, Bitcoin will dump. Bitcoin नीचे जाएगा. जो न्यू डॉट प्लॉट का आया है, it's 5.6% in 2023, which is hawkish, which is good for USD but bad for gold and bad for Bitcoin, which means कि Bitcoin नीचे जाएगा. अभी तक resilient है, लेकिन I think it's gonna move. असल मूवमेंट होगी जब फेड बात करना शुरू करेगा, जब जेरोम पॉल बात करना शुरू करेगा. So USD is stronger, Bitcoin is gonna go down. Bitcoin is gonna go down. Bitcoin will dump. Bitcoin will dump so far, according to dot plot. Yep, USD is stronger because Fed is holding rates as widely anticipated. Stocks gapping lower amid a hawkish surprise. It looks like a skip and not a pause. Very hawkish. USD positive. Yes, USD positive. Bitcoin नीचे जाएगा. Oh God. Okay.
From where are you reading these updates? From the reports जो वो लोग publish करते हैं on their official website. Bitcoin is gonna go down, Vikas. शुक्र है, Yep. भेजिए इसको फिर जल्दी से। जा रहा है मैंने कहा था ना Make बताओ डंप clear, करना है पूछ पंप करना आज है पहली बार ही हम लोग लाइव में कह रहे हैं बिटकॉइन नीचे जाए। क्रिप्टो बिटकॉइन के सबसे बड़े प्रोपोनेंट्स हम लोग कह रहे हैं नीचे हाँ जाएगा यार, That's बोल what राज बैठे कह रहे हैं बिटकॉइन नीचे जाए। और किसके प्रोपोनेंट हम लोग बिटकॉइन के देखो yeah. कोई नहीं, इस वजह से डंप पे हो रहा है बिकॉज मैंने तुम लोगों को बताया ना कि इट्स अ हॉकिश, इट विल बी अ हॉकिश पॉज, यानी कि पॉज तो कर देगा लेकिन फिर वो आगे से हम लोग की जबान में चबली जरूर मारेगा कि जुलाई में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। दैट्स द रीजन। यप 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 नीचे हम लोग ठीक है। आप कैसे रोनी अरोरा? लॉन्ग टाइम। हम लोग बिल्कुल ठीक है, आप बताओ आप लोग कैसे हो? अब बिटकॉइन को देखो, इट्स गोना गो डाउन नाउ। और असल तो मजा जब आएगा जब फेड बोलना शुरू करेगा, जेरोम बोलना शुरू करेगा, व्हिच इज 30 मिनट्स फ्रॉम नाउ। रोनी भाई क्या हाल है, ठीक हो? बिटकॉइन ऑलरेडी नीचे आना शुरू हो गया। फेड इज वेरी हैप्पी विद द बैंकिंग सिस्टम। सबसे मजे की बात यह है कि इनके बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं बट फेड हमेशा से खुश रहता है बैंकिंग सिस्टम। फेड को कोई प्रॉब्लम नहीं है बैंकिंग सिस्टम से। लाला व्हाट शैल वी डू? वेट फ्यू वीक्स। लाला आपके लिए हाँ, क्वेश्चन। इंतजार करो बस, अब आराम से पुरसुकून हो जाओ। लाला आप तो बिल्कुल ही पुरसुकून हो जाओ ना, आपका तो आई एम आउट ऑफ ऑल लॉन्ग्स, प्लीज प्लीज सारे Thank you लॉन्ग से guys, निकल जाओ। made उसको some नहीं good profits on render yesterday. क्या बात है render? आई वांट 10x इन 1 ईयर। मुझको भी एक साल में फिरारी और बेंटले चाहिए, क्या ख्याल है? अब जो है मार्केट इज गोना वेट फॉर पावल। गोल्ड बिल्कुल बुरी तरीके से डिप किया है। बिटकॉइन मजे की बात है, इतने बुरी तरीके से डिप नहीं किया जितने बुरी तरीके से गोल्ड डिप किया। लुक एट XUD XUA। नहीं जा रहा है, बिटकॉइन जा रहा है, बेफिक्र हैं आप, इसको थोड़ा हौसला दें जरा, थोड़ा यप टाइम दें, ये देखिए गिरता है कैसे। यप 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 गिरेगा गिरेगा। फेड अच्छा इनकी है कि इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड एट 5.5 to 5.25% as expected. Yep, dollar may further get stronger जैसे पावल बात करेगा because Powell will be hawkish. That's what they're expecting. He will be very very hawkish in 30 minutes from now. 30 minutes में भी उसकी स्पीच शुरू होगी। Yep, I think 2 हाइक्स और अब फैक्टर्ड इन है इस साल। 2 हाइक्स और होंगी मोस्ट लाइकली जुलाई में, जिसकी वजह से we will be आई थिंक आज टिकटॉक का कोई मसला ही बार बार है ना, हाँ मुझे डिस्कनेक्ट कर रहा है। एक मिनट आती है। अच्छा, गुड इवनिंग बूम शॉट लगाना शुरू हो गई थी। बिटकॉइन कितना गिर रहा है नीचे, कुछ सही तरह गिरे ना मजा आए फिर। अच्छे तरीके से आए जस्ट। Okay. Pause is very much expected. Pause का तो कोई मसला नहीं है, but the thing is, जुलाई में दोबारा से इंटरेस्ट रेट हाइक होगा। Dow has dropped 200 points. Okay, Dow has dropped. How about S&P को? S&P को फॉलो कर रहा है वकास? S&P को फॉलो कर रहे हो? वैसे तो हाँ, S&P 500 में देखता हूँ। Yeah, वैसे तो decouple हुआ S&P 500। S&P 500 इतना नहीं गिरा लेकिन गिर रहा है अभी। गोल्ड बहुत बुरे तरीके से गिरा है। S&P 500 4393 से। अच्छा चलो देखते हैं अभी इसको कितने दे। S&P जो है वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया since late April, above 4,300. But it's decoupled. Crypto is decoupled with S&P so far. देखो। Yeah. PPI जो आज डेटा आया था, which was also an important data, कल CPI था, आज PPI था, वो हुआ 0.3%, which is a good thing for Bitcoin. आज इंटरेस्ट रेट पॉज होना भी गुड है फॉर Bitcoin, लेकिन अगर जेरोम ने अपनी स्पीच में कंसिस्टेंटली उस बात पे प्रेस करता रहा कि हम लोग जुलाई में इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, वी आर डेटा ड्रिवन, हम लोग जुलाई में इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, 2 इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे इस साल और मजीद, तो फिर हम लोग बिटकॉइन को नीचे जाते देखेंगे। हम लोग की शॉर्ट्स निकल जाए बकास, थिंक आना शुरू होगी नीचे इंशाल्लाह। अल्फा दोनों आ रहे नीचे। या
सुई भी आया ना नीचे। बाय द वे सुई तुम लोग जरूर बाय करो। आज हम लोगों ने कोई 2-3 घंटे सुई पे बात की एंड सुई इज वेरी गुड। आई ट्रूली होप सुई डज अ लॉट। गुजर साहब कह रहे हैं ये तो नीचे जा रहा है BTC। जी जाने दो लाला, जाने दो हम इसको लोग नीचे भी तो तो। यही कह रहे हैं। हम बैठे ही इसलिए आज इसको गिरा के छोड़े। इसको गिराने के लिए छोड़ रहे हैं। हम लोग की 2 शॉट्स ऑन है। हम लोग को नहीं गिराना है बिटकॉइन को। ईथ बूम शॉट। परफेक्ट 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 परफेक्ट। गिर रहा है, काफी अच्छा गिर रहा है। अच्छा ये सपोर्ट पे रुका, आके यहाँ से गिरे ना 1 आवर पे सपोर्ट पे, नाइस। गिर जो हाँ बेटा। नीचे हम लोग यही तो कह रहे हैं कि बिटकॉइन शुड गो डाउन। हम लोग चाहते हैं बिटकॉइन नीचे जाए। अल्फा लीना देखो जी, वो आ गए नीचे, आ गया। XRP भी गिरा बुरी तरीके से। गिरा, गिरने दो। XRP गिरा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आज हम खुश हुए, मंगे बहुत बहुत खुश हुआ। Bogembo. But isn't Sui currently only 10-15% security supply, so low still be unloaded to market in the longest? So this is the reason, na Saj, early investor, early birds catches the worm. तो अभी बहुत early है सुई में एंट्री लेना। सुई मुझको और विकास भी, आप इस बात से, हम लोग इस बात पे अग्री कर रहे हैं कि सुई कैन बी नेक्स्ट, वी कैन नॉट से नेक्स्ट सोलाना, बट वो इसी बात पे बहुत ज्यादा उसकी कैटेगरी में है। इसको भी काफी इसके इकोसिस्टम को डेवलप करना है, इनको बड़ी चीजें शो करनी है। पर लेट्स सी, देखते हैं। सुई को तो अभी बातें ही हैं सारी, लेकिन करे भी कोई काम फिर पता चलेगा। Guys, your views on refund? यार इस वक्त हम लोग रोनी, we are trying to cover the FMC meeting, we are trying to cover the dot plot, we are trying to cover the market. तो इस वक्त आज तुम लोग टोकन्स का ना पूछो। पहले बेस का बोल बाला बुल क्या करे बेचारा। Exactly. यार आज नीचे गिर जाए, वैसे जब हम कहते हैं ना गिरे तब तो गिरता ही है। आज गिर जाए थोड़ा सा, ताकि बच्चों की ट्रेडें लगी हुई हैं, उनको 3 ट्रेडें अच्छी सी तगड़े पैसे, इनके पोर्टफोलियो डबल हो जाएंगे। वैसे देखो इसने, लीना ने कितना नीचे विक लगाई है। लीना ने कितनी नीचे विक लगाई है। आने दे अभी कुछ नहीं, अभी अपना ट्रेंड तोड़े ना थोड़ा सा। लीना में जूस नहीं है ना, ये अल्फा में है। आई थिंक इन्होंने जितना करना था वो कर लिया। व्हाट डू यू थिंक? हो जाएगा। क्या 1 आवर पे भी है ना, इसका काफी अच्छा बन रहा है। लेट्स सी। I projected Bitcoin turn end of July. क्या होगा Bitcoin end of July? क्या लगता है आपको? Mr. M, what do you think? By the way, market is factoring in कि 2 interest rates और बढ़ेंगे इस साल में। पिछले साल अप्रैल से consistently बढ़ रहे हैं, अप्रैल या I think मई से। और today will be the pause one. However, it will be a hawkish pause because Jerome ने he's calling कि 2 interest rates बढ़ेंगे इस साल और। But we don't know. Fed could change his mind as well. Vikas, I think next 25 minutes में ना निकल जाए ट्रेड से। अच्छा, What do you think? हाँ ठीक है। Before he starts speaking, because अब ये कह रहे हैं कि Fed can change its mind because inflation is falling fast. So अगर वो ये कहते हैं कि 2 इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होंगे, सिर्फ 1 होगा, तो भी मार्केट पंप करेगी। अच्छा, क्या ख्याल है आपका? इसमी मौसम, इसमी 3 हाई मौसम SOI नहीं सुई, SUI सुई है। I was told by someone that since I am new learning cryptocurrency and I should invest with him. ये किसने बोला था? What looks like 3D printed on camera. Wow. वेलकम साम, थैंक यू पैरी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। ज्वाइन करो प्लीज, लाइव को लाइक करो, शेयर करो। वी आर ट्राइंग टू कवर FMC meeting. We are making an effort, so keep double tapping the screen. Keep double tapping the screen. विकास, क्या ख्याल है आपका जो मैंने आपसे पूछा है? What do you think? इसका 20 minutes में आउट। ठीक है। क्या कहते हो? हाँ मेरे ख्याल में ठीक है, निकल जाते हैं। आप मैसेज करो ग्रुप में, मैं कर दूं। कर दे, आप कर दे। ब्रेक इवन टू राइट। अच्छा मैं करता हूँ। Okay, thank you. It's me who said and invest with him via cash. क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो आप? कैन पैक बुकिंग क्या कहना चाह रहे हो आप? I didn't get your question, your comment. It's tricky, Reelborn. It's very very tricky. It's very very tricky. जैसे जैसे खबरें आ रही है, मार्केट का सेंटिमेंट चेंज हो रहा है।
Yeah, बहुत choppy market देखेंगे, that is for sure, that's guaranteed. Very very choppy market. जेरोम ने start करना है at 30 past. अभी से 19 मिनट में. Yeah, technically it should go up in end of July. It will be a big move. Okay, ठीक है, we'll see. Keep sending the likes, keep double tapping the screen को double tap करो. मौसम, मिस्टर एम मौसम, ओ अच्छा मौसम, ओके. अब अपने नाम चेंज करते रहे तो मुझे क्या पता आप मिस्टर एम हो आजकल. थैंक यू अकबर फॉर ज्वाइनिंग आर TPCR. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग. Yep. Very choppy market ahead. When he will speak, market will be super choppy. I still am expecting a choppy market, लेकिन अभी चूंकि फेड ने बात करना नहीं शुरू की, जेरोम पॉल की स्पीच अभी शुरू हुई नहीं है. आई थिंक अभी से इसकी मीटिंग शुरू होनी है. ही विल स्टार्ट स्पीकिंग एट, बाय द वे अगर आप लोगों को सुनना है तो याहू फाइनेंस पे जाओ, यूट्यूब याहू फाइनेंस, वहां पे इसकी लाइव कवरेज होगी. 30 अभी से लाइक 17 मिनट्स में शुरू हो जाएगी इसकी मीटिंग. आई लीव द लिंक ऑन टेलीग्राम. ठीक है, मैं टेलीग्राम पे तुम लोगों के लिए लिंक छोड़ देती हूँ. तो जिसको उसकी मीटिंग देखनी तो गो टू माई टेलीग्राम, लिंक इन बायो, एंड यू कैन साइन इन योरसेल्फ टू हियर हिम स्पीक. Bitcoin is gonna drop. So far. Again, I don't move the market. It's Jerome. Uske words will move the market. Unless he gets very, very, very dovish, which is not a possibility. Market will drop. Do observe DXY dollar index. Do observe Bitcoin. Bitcoin is dropping. Also, yep, the market will be pretty parabolic. Very, very parabolic. I know it's early, but it will be bullish day to day. चलो, let's see. बुलिश एक ही सूरत में हो सकता है अकबर, अगर जेरोम जो है वेरी वेरी डविश हो जाए. The inflation is far from their target. 2% से बहुत आगे है, ऊपर है. Yep, do you see Bitcoin 22K soon? 22 तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है कहना. 24, yep, probably. अभी मैं only Bitcoin will cross 50,000 if Paul gets harder. हो ही ना जाए उससे. अभी मैं only आपको सुनूंगा, no more trades. Well done, thank you. Don't trade this market, it's very very. Asheen, you said earlier you expecting green Bitcoin. हाँ, मैंने बिल्कुल कहा था. Depending कि जेरोम जो है वो डविश टोन रखे, यानी कि वो सॉफ्टवेयर है, यानी कि वो ये ना कहे कि हम लोग जुलाई में दोबारा इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, या हम लोग 2 इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे, या हम लोग डेटा ड्रिवन है, या अभी इन्फ्लेशन टू हाई है हम लोगों की एक्सपेक्टेशन से. ये सारी बातें होकिश कहलाती हैं. ठीक है, होकिश यानी कि होक यानी कि चील, क्या कहते हैं उसको, चील कहते हैं, जो भी कहते हो उर्दू में. तो उसकी वो वाली टोन ना हो. अगर वो डविश टोन रखता है, यानी कि सॉफ्टवेयर टोन रखता है कि ठीक है, वी आर हैप्पी, हम लोगों की इन्फ्लेशन इस हिसाब से चल रही है जैसे हम गिर रही है, जैसे हम लोग चाह रहे हैं, आवर टूल्स आर वर्किंग, ब्ला ब्ला ब्ला, अगर वो ऐसी बातें करता है देन बिटकॉइन विल गो ग्रीन. लेकिन so far आई डोंट थिंक सो इट विल गो ग्रीन. इट विल, बिकॉज फेड इज वेरी वेरी हॉकिश. so far he is hawkish. Where do we observe DXY dollar index? Rahul Chopra, trading view पे जाओ, DXY का चार्ट खोलो, that's how you observe. Go to trading view and open the DXY chart. But yeah, most likely हम लोग पैनिक सेलिंग भी देख सकते हैं. ये भी होता है, फेड के बोलने से पहले पैनिक सेलिंग होती है, and he is going to start speaking in next 14 minutes. Rates predicted to fall in next 18
18 months लिखना चाह रहे हैं आप यूजर 404 आप months लिखना चाह रहे हैं आई थिंक जी बिल्कुल बिल्कुल expected to drop okay तो फेड ने जो अभी तक स्टेटमेंट दिया ही स्टेटमेंट इज डिफरेंट एंड व्हेन ही स्पीक्स टू द प्रेस दैट्स डिफरेंट अभी उसके सिर्फ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ के बता रही हूँ जिसकी बेस में मैं आपको ये सारी बातें कह रही हूँ व्हेन ही इज गोना स्पीक टू द प्रेस दैट इज गोना एक्चुअली मूव द मार्केट सो एज पर हिज स्टेटमेंट उसने कहा कि इन्फ्लेशन अभी भी ज्यादा हाई है एलिवेटेड है बढ़ी हुई है और जॉब गेन्स जो है वो अभी भी बहुत रोबस्ट है इन रीसेंट मंथ्स यानी कि जॉब कंसिस्टेंटली गेन हो रही है ये नहीं कि उनका जो जॉब मार्केट है इट्स प्रीटी स्ट्रॉन्ग ठीक है दैट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स ए हॉकिश स्टेटमेंट के इंटरेस्ट रेट अगर वो अभी पॉज कर भी देता है आज जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है तो भी ही विल बी हॉकिश वो कहेगा कि हम लोगों ने अभी मे बी 2 इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पर दिस ईयर और मे बी एक सो विल सी और उसने बहुत इंपॉर्टेंट बात की विच सेज कि एक्सटेंट ऑफ एडिशनल पॉलिसी फर्मिंग मे बी अप्रोप्रिएट विच मीन्स कि उनकी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना ताकि इन्फ्लेशन को नीचे लेकर आए तो इस पॉलिसी को मजीद फर्म करेंगे मजीद वो लोग इंट्रोड्यूस करेंगे मजीद उसको इंटीग्रेट करेंगे दैट इज ए वेरी हॉकिश स्टेटमेंट दैट्स व्हाट ही हैड सेड अगेन ये स्टेटमेंट्स हैं जो कि उसने रिलीज किए हैं फेड ने लेकिन इन 11 minutes 12 minutes he's going to speak to the press and that is going to actually move the market क्योंकि जो भी उससे जो उनके सहाफ़ी होते हैं जर्नलिस्ट्स होते हैं वो उससे सवाल पूछते हैं उनके जवाब देते हैं that's what moves the market thank you guys for sending me the likes भेजते रहो मेरी लाइव को शेयर करो I'm trying to cover FOMC minutes FOMC meeting trying to show you कि किस तरीके से market move करती है when Fed speaks when Jerome speaks so do keep sending me the likes on the live The Fed is talking hawkish but will act dovish. चलो we'll see. Maybe we'll see. क्या हुआ trades का? हाँ जी मैं ग्रुप में उनको बता रहा हूँ क्या? कि ना निकल गया अल्फा तो कंसिस्टेंटली वहां से रिजेक्ट हो रहा है ठीक है 1.200 से कंसिस्टेंटली रिजेक्ट हो रहा है अल्फा मुझे अल्फा की इतनी फिक्र नहीं है एसएलपी हम लोग का काफी ऊपर है and Bitcoin is dropping. However, अच्छा एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इस साल के लिए और नेक्स्ट के लिए मजीद अपग्रेड हो गई सिग्निफिकेंटली 5.6% for 2023 and 4.6% for 2024 and from 5.1% to 4.3% respectively in May. Again, Fed is more hawkish than expected. मियाँ साहब क्या चला है मियाँ साहब बहुत अच्छे बात है लाइव में ठीक ठाक मियाँ साहब आप कैसे हैं गॉडफादर 14 के सुन चलो ठीक है let's see became thank you Sayyid Mustajab Kazmi for the gift thank you so much one more hike still possible हाँ one more or maybe two more let's see what ये तो तभी पता चलेगा जब वो कुछ कहेगा market going down or up in coming months I think हम लोग summer rally देखेंगे and Bitcoin is dropping like anything लीना अल्फा क्यों नहीं गिर रहा है ये लोग गिरते बिटकॉइन थोड़ा और आएगा नीचे ये गिर जाएंगे गिर रहा है ये वो क्यों अभी तक ग्रीन में मुझे रेड देखना है I want to see red लीना and अल्फा thank you Imran for the rose thank you so much कैसे इमरान काफी दिनों बाद आप आए thank you for the roses Imran thank you so much I started learning crypto so start a future trade as well that's good Mia Saab that's good बेयर मार्केट में भी काम कर रहे हैं जब बुल रन आएगी सब यूट्यूबर आ जाएंगे एग्जैक्टली थैंक यू लव यू थैंक यू फॉर रिकग्नाइजिंग अस थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग अस एग्जैक्टली जो यूट्यूबर्स कंटेंट क्रिएटर्स ट्रेडर्स बेयर मार्केट में एक्टिव हैं दोज आर द वंस नॉट जस्ट मी नॉट जस्ट हिम नॉट जस्ट अस जो भी एक्टिव हैं जो भी ट्रेड्स कर रहे हैं दोज आर द वंस
That others इंशाल्लाह बुल मार्केट में हम लोग इससे भी ज्यादा एक्टिव होंगे. Are we going to 20K? Rahil, I don't think so. आपको लगता है वकास 20K आप देख सकते हो Bitcoin? I don't think so. इतना या लेस लाइकली. कुछ लोग तो कह रहे हैं 25 इसका बॉटम है. मेरा भी ख्याल है शायद ही 24,700 तक एक विक लगा ले, शायद 24,500, but that's it. लेकिन असल मसला पता है कि इसने जो वीकली पे 200 तोड़ी है ना, ब्रेक की है, तो वो अच्छी बात नहीं है. वीकली पे 200 भी तोड़ी है और उसने 20 भी तोड़ी है, तो ये थोड़ा सा ना बेरिश होता है इसके लिए. तो लेट्स सी, देखते हैं RSI क्या इस वीक पे क्या करता है. ये वीक काम बंद करता है, हो सकता है जैसे विक लगा के चला जाए, क्योंकि इस वक्त जो नेगेटिव ट्रेंड है ना, नेगेटिव सेंटिमेंट, दैट्स फुल ऑन. नहीं यार 10 के बिटकॉइन नहीं जाता. ऐसी कोई इतनी भी आग नहीं लगी बिटकॉइन को 10 के. एक चीज याद रखना, जब एक बार रिटेल कस्टमर आ जाए ना मार्केट में, फिर बड़ा मुश्किल होता है बिटकॉइन को इतना नीचे लेके जाना. गॉड फादर तो बिल्कुल ही. वालेकुम अस्सलाम आमिर. नहीं यार 10 के पे नहीं जाता बिटकॉइन, सॉरी. 10K पे कैसे जाएगा जब पिछले साल लूना का इतना बड़ा क्रैश हुआ जून में, तब भी हल्का सा 15,000 को, पता नहीं 15,700 को आई थिंक छू के बारीक सी विक बनी थी, तब से ऊपर है. फिर हम लोगों ने FTX का क्लैप्स देख लिया, हम लोगों ने बाइनेंस का इतना फट देख लिया, हम लोगों ने 3ACs का क्या कुछ नहीं देख लिया. बिटकॉइन नहीं गिरा 15 से नीचे, तो कैसे 10 का जाएगा? नहीं जाएगा 10 का बिटकॉइन. अनलेस जैसे मैं कि हमेशा कहती हूँ कि गिव मी अ न्यूक्लियर वॉर, खुदा ना खास्ता गिव मी अ न्यूक्लियर वॉर, एंड देन वी गोना सी बिटकॉइन टू 9K 9-10K. लेकिन वहां पर भी बारीक पिक लगेगी, फिर जो पंप करेगा बिटकॉइन वो देखना, मगर अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी हो. वालेकुम सलाम आमिर, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. अभी मैं खुश नहीं बता सकता. क्या मतलब खुश नहीं बता सकता? आई वॉन्ट टू लर्न बाय समवन इन कैनेडा. मेरी बात सुनो, कैन पाक कुकिंग फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहे, बहुत कम. क्रिप्टो की मार्केट बहुत छोटी मार्केट है, बहुत छोटी मार्केट है. दुनिया के मेरे ख्याल से 2-3% पूरी पॉपुलेशन क्रिप्टोज में बिलीव करती है. उसमें से भी आपको फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है कि मुझे किसी से लर्न करना है जो कनाडा में बैठा हो, तो फिर आप अब इंतजार ही करो, ये कह सकती हूँ. शुड वी इन्वेस्ट इन VR? VR इज गुड. कार्डानो एंट्री प्लीज. यार अनवर अभी जरा एंट्रीज ना पूछो. टुडेज लाइफ इज कवरिंग FOMC. उस पर आके पूछ लो टेलीग्राम पे, आई एम गोना टेल यू, क्योंकि अभी हम ट्राइंग टू कवर FOMC मीटिंग है. लाइटकॉइन बाइंग आई थिंक $67-68 इज अ वेरी गुड बाइंग, अगर तो चला जाए वहां पे. अभी लाइटकॉइन की प्राइस क्या है? मेरे सामने लाइटकॉइन का चार्ट नहीं खुला हुआ. अभी भी लोग USDT लेकर बैठे हैं कि 12K पर जाएगा ना. 12,000 का बिटकॉइन नहीं हो रहा. और अगर हुआ भी तो ट्रस्ट मी, तुम लोगों को चांस भी नहीं मिलेगा 12,000 पे बिटकॉइन बाय करने का. चांस भी नहीं मिलेगा. एक बारीक सी विक बननी है. इतने बड़े बड़े बाय ऑर्डर्स लगे होंगे ना, जो कि सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन सारों ने पिक करना है. तो डोंट थिंक सो, और डोंट थिंक कि तुम लोगों का 12 का हो जाएगा तो 12 पे 2 महीने बैठा रहेगा, फिर आप लोग उठोगे, फिर आप लोग अपने बाय ऑर्डर्स लगाओगे. ऐसा कुछ भी नहीं होना. सो प्लीज गेट अ रियलिटी चेक. 12-14 का नहीं होना. और अगर हो भी क्या तो तुम लोगों को बाय करने का मौका नहीं मिलना, बिकॉज माइंड यू गाइस आर रिटेल इन्वेस्टर्स एंड नॉट whales and not institutional investors. uh, um, नहीं, मेरा भी बिल्कुल ख्याल है. यूजर 935. वकास आपको क्या लगता है? क्या? लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि बिटकॉइन 12,000 को हो गया. ठीक है, एक सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं. डू यू थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स को बाय करने का मौका भी मिलेगा 12,000 का बिटकॉइन? अगर 12,000 में बिटकॉइन चला गया ना, एक सेकंड में चार्ट देखता हूँ, इस चीज में जाता हूँ, फिर बिटकॉइन को रिकवर करते हुए ना बहुत अरसा लग जाएगा. अव्वल तो 12 का होगा नहीं होगा. 12 का होगा तो किसी को बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलनी भी नहीं. नहीं, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी. नहीं, बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं. फिर ये लोग है ना क्रिप्टो की बुलन को बहुत दूर ले जाएंगे. मसला ये है ना कि अभी जिस तरह हमारे पास मीम पेपे हुआ ना, पेपे बिल्कुल वैसा है जैसे पिछली बुलन की शुरू के अंदर है ना, सेफ मून और ये क्या नाम है इसका, शिवा वगैरह लॉन्च हुए थे उस टाइम पे. पेपे को वैसा बूस्ट मिला, ठीक है ना, और रिटेल कस्टमर आए हैं. एक चीज मुझे बताती है कि अगर मीम सीजन आ गया ना, तो आपको
आपको रिटेल कस्टमर, रिटेल बुल रन तब शुरू होती है तब, यानी कि रिटेल की एंट्री लाजमी होती है। तो इस तरह की मीम को इस तरह पंप करते हैं। आई डोंट थिंक कि हम लोग 10 का देखेंगे, 15 का मुश्किल के मर के लगेगा। बहुत मुश्किल है। अगर 12 पे चला जाता है, ठीक है ना, मैं एक सिनारियो लेके आता हूँ 12 पे। आप 12 को पिछली बुल रन की बिल्कुल शुरू, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पिछली बुल रन की जो स्टार्टिंग थी ना, वहां पे ये 10-20 उसकी थी प्राइस, ठीक है। और नो, ऐसा नहीं हो सकता, मुश्किल है। बाय ऑर्डर लगा के छोड़ दो, और अगर आपका हम बाय लोग वो ऑर्डर फिल भी ना 15 हुआ, है ना, जो 15 है ना, वो लोएस्ट आई थिंक बॉटम था 15-16 के अगर ऐसे। ये कह रहे हैं कि बाय ऑर्डर, मैं कह रही हूँ 12,000 का बिटकॉइन आपको खरीदने का मौका भी नहीं मिलेगा, तो ये आगे से मुझे कह रहे सवाल हैं पैदा कि नहीं होता। सैयद हुसैन कि बाय ऑर्डर लगा के छोड़ दो। अगर आपका बाय ऑर्डर फिल ना हो लेकिन एक्सचेंज ऑर्डर मैं गारंटी लिख के देता हूँ, कभी फिल नहीं होगा, मुश्किल है। ऑर्डर ही नहीं फिल होना, आप खरीद ही नहीं सकोगे, नहीं नहीं खरीद नहीं ही नहीं नहीं नहीं, सकोगे। क्योंकि ऐसा होता है कि आई थिंक जो प्रीवियस बुल होती है ना, उसकी जो इनिशियल जो टॉप होता है ना, उसके ऊपर ये ना इनका बॉटम लगता था, ऐसा कुछ सिनेरियो होता है आई थिंक। एक सेकंड ठहर जो मैं बताता हूँ आपको। इसका 20 दिसंबर 2017 में बिटकॉइन आया था 20 के, ठीक है। वहां से ये बिटकॉइन another 5% गिरा, या 10 से, या नो चांस, सवाल ही पैदा नहीं होता आपका। बहुत मुश्किल है ये, नामुमकिन सी बात है। नहीं, बिटकॉइन नहीं आ सकता इतने नीचे। मैं मैंने वही बात, मैं वही तो कह रही बाई थी कि किया अगर था लेट्स से 20 आप हाँ जी, भी ऑब्वियसली। गया, तुम लोग के ऑर्डर्स ही फिल नहीं होने। नहीं यार, ऑर्डर फिल नहीं होने, इनकी भूल है। मैं कह रहा हूँ यहाँ से जिस तरह के हम लोग ऑन चेन डेटा देख रहे हैं, जिस तरह की एक्टिविटी देख रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ये लोग इधर बैठे रहेंगे पीछे की, तो बैकडोर तुम्हें पता ना क्या किस तरह की एक्टिविटी चल रही है बैकग्राउंड में। नो, सवाल ही पैदा नहीं होता। 20 हम बॉटम देख ले, ज्यादा ज्यादा वहाँ 18, मुझे लगता है बात 20। बिटकॉइन नहीं हो रहा 10-12 हज़ार का, 14,000 का, लिख लो, मार्क माई वर्ड्स। अनलेस 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 कोई बहुत बड़ी, अल्लाह ना करे कोई नेगेटिव, बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट में, और नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो भी बिटकॉइन ने थोड़ी सी विकसित बना के तो पंप हो जाने में। काश मैं एक सेकंड में आती हूँ। हाँ, अच्छा जी, आपका क्या ख्याल है बीटीसी पर? किस तरह का ख्याल? मैंने लिया लिया लिख लिया, ठीक है, जबरदस्त आपने कर दिया। अच्छा जी, थिंक 2027 वन मोर चांस है शायद, is coming in December, big dump is coming in December के ख्याल से। मैंने निकाला बाइंग प्राइस, ये लास्ट बाइंग समर। वन ऑन वन आजकल कोई नहीं सिखाता था, मुश्किल है। और आप ज़्यादातर यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख लो, स्पॉट की बाइंग वगैरह आप लोग खुद ही सेल्फ एजुकेट करना पड़ेगा। 22,000 जी, 22,000 ऐसे ही हो सकता है, या 22,000 इस तरह का, 24,000 कुछ कहते, 25 यहीं से जहाज हो जाएगा। लेट्स सी। चलो इसको बिटकॉइन स्टॉप स्पीकिंग नाउ। इतनी जल्दी बॉटम्स नहीं बनाता था, बड़ा मुश्किल होता है बिटकॉइन के लिए। इसने जब लोअर लो लगाया ना अराउंड 15 के पास, उसके बाद इतनी जल्दी दोबारा ट्रेंड लाइन को टच करने नहीं आता। तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ चक्कर है। तो लेट्स सी, बुलिश है हम लोग, बुलिश है। Okay, he is going to speak now. Papa Powell pump my bags. कॉमेंट्स कितने मजे में देखे होते हैं। थोड़ी देर पंप करेगा, फिर डंप कर देगा। हाँ, पंप करेगा फिर डंप करेगा, रिजेक्शन होगी, प्रिजम्पशन होगी। फंडामेंटली वेयर डू यू थिंक द बॉटम इज? फंडामेंटली बॉटम मेरे ख्याल से इस वक्त 24,000 है, 25,000, नॉट लोअर देन दैट। सुलाना को होल्ड करें या सेल कर दें? डेफिनेटली बाबा, सुलाना इज अ वेरी वेरी गुड वन, डोंट सेल इट। $18 से नीचे का सुलाना मिलता है, बैग्स भरो। सुई, सुलाना, मैटिक, ARB तो इतना, मतलब इट्स अ वेरी गुड वन, लेकिन उसकी बाइंग काफ़ी वो हो चुकी हुई है, बाइंग निकल गई है मेरे ख्याल से ARB की। व्हाट डू यू थिंक विकास? किसकी? मैटिक ARB एआरबी की। अगर बिटकॉइन गिरा तो ये भी नीचे आ जाएगा। वैसे तो $1 से अंडर मैंने आपको बोला था बाय करना। Here comes the Papa Powell. इसको किन्होंने बोला है किसको निकालो? कांग्रेस ने किसको बोला किसको? जेरोम पॉल को निकालो, सेट करो। Good afternoon.
My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. We understand the hardship high inflation is causing, and we remain strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve. User 404 यार Without please price ज़बान से इस्तेमाल करो यार फिर I'll just literally please यार we will not Zaban. achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Since early last year, the FOMC has significantly tightened monetary policy. We have raised our policy interest rate by 5 percentage points, and we've continued to reduce our securities holdings at a brisk pace. We've covered a lot of ground, and the full effects of our tightening have yet to. He just has a strong commitment to lowering inflation, so he is hawkish. In tightening policy, certain lags with which monetary policy affects the economy, and potential headwinds from credit tightening. Today, we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Looking ahead, nearly all committee participants view it as likely that some further rate increases will be appropriate this year to bring inflation down to 2%. He just said they are expecting more tightening, which is very, very hawkish, Bitcoin red. After briefly reviewing economic developments. The U.S. economy slowed significantly last year, and recent indicators suggest that economic activity has continued to expand at a modest pace. Although growth in consumer spending has picked up this year, activity in the housing sector remains weak, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment. Committee participants generally expect subdued growth to continue. In our summary of economic projections, the median projection has real GDP growth at 1.0% this year and 1.1%. The labor market remains very tight. Over the past 3 months, payroll job gains averaged a robust 283,000 jobs per month. The unemployment rate moved up but remained low in May at 3.7%. There are some signs that supply and demand in the labor market are coming into better balance. The labor force has moved up, particularly for individuals aged 25 to 54 years. Nominal wage growth has shown signs of easing, and job vacancies have declined so far this year. Housing market जो है वो it's weaker, जिसकी वजह से ये होगा. Some certain increases are likely appropriate. They have already factored in that the labor market remains very, very tight, which tight. Some signs supply and demand in labor market are coming to a bit balanced. ये dovish tone है, इसकी इसने dovish बात की है क्योंकि supply chain और supply और demand को catch करना ही इनका सबसे बड़ा मसला है. लेकिन inflation remains way above the goal, which is again a hawkish tone. Core PCE prices rose 4.7%. In May, the 12-month change in the consumer price index came in at 4%, and the core CPI was 5%. Inflation has moderated somewhat since the middle of last year. Nonetheless, inflation pressures continue to run high, and the process of getting inflation back down to 2% has a long way to go. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 3.2% this year, 2.5% next year, and 2.1% in 2025. Core PCE inflation, which excludes volatile and food and energy prices, is projected to run higher than total inflation, and the median projection has been revised in the SEP up to 3.9% this year. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. एक चीज उसने dovish की है जो कि वो ये कह रहा है कि the full effects of tightening are yet to be felt. This is a dovish sign, as he said. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes hardship
as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. As I noted earlier, since early last year, we have raised our policy rate by 5 percentage points. We have been seeing the effects of our policy tightening on demand in the most interest rate sensitive sectors of the economy, especially housing and investment. It will take time, however, for the full effects of monetary restraint to be realized, especially on inflation. The economy is facing headwinds from tighter credit conditions for households and businesses, which are likely to weigh on economic activity, hiring, and inflation. The extent of these effects remains uncertain. In light of how far we've come in tightening policy, the uncertain lags with which monetary policy affects the economy, and potential headwinds from credit tightening, the committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5 to 5.25%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. As I noted earlier, So एक दफा स्टेटमेंट उसने ये दिया कि they have seen the effects of interest rates in housing and investment. तो जो interest rate का जो effect है वो housing और investment में लोगों ने देखना शुरू कर दिया. That's a dovish sign, which means that he's acknowledging कि उनका जो interest rate hike का policy है, it's working to reduce inflation. Information and its implications for monetary policy. In determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. In our SEP, participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate based on what each participant judges to be the most likely scenario going forward. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 5.6% at the end of this year, 4.6% at the end of 2024, and 3.4% at the end of 2025. For the end of this year, the median projection is a 0.5 percentage point higher than in our March projections. I hasten to add, as always, that these projections are not a committee decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path for policy will adjust as appropriate to foster our maximum employment and price stability goals. We will continue to make our decisions meeting by meeting based on the totality of incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation, as well as the balance of risks. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a period of below-trend growth and some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do at the Fed is in service to our public mission. We will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your questions. Okay, now the market is going to move. Watch the market. Watch Bitcoin. Thank you. Colby Smith with the Financial Times. I'm curious what gives you and the committee the confidence that waiting will not be counterproductive at a time when the monthly pace of core inflation is still so elevated. Interest rate sensitive sectors like housing, while they felt the drag of the past Fed actions, have started to recover in some regions, and financial conditions, most recently were easing. So I guess I would go back to the beginning of this tightening cycle to address that. So as we started our rate hikes early last year, we said there were 3 issues that would need to be addressed kind of in sequence. And that of the speed of tightening, the level to which rates would need to go, and then the period of time over which we'd need to keep policy restrictive. So at the outset, going back 15 months, the key issue was how fast to move rates up, and we moved very quickly by historical standards. Then last December, after 4 consecutive 75 basis point hikes, we moderated to a pace of a 50 basis point hike, and then this year to 3 25 basis point hikes at sequential meetings.
So it seemed to us to make obvious sense to moderate our rate hikes as we got closer to our destination. So the decision to consider not hiking at every meeting and ultimately to hold rates steady at this meeting, I would just say it's a continuation. उसको प्रेस ने एक सवाल पूछा है, जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा, उसको जवाब दे रही है. Now is determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time. तो so far इसने 3 डविश बातें की हैं फेड ने, जेरोम ने, कि ऑब्वियसली जो फुल इफेक्ट होगा उनकी मॉनेटरी रिस्ट्रेंट का वो अभी रियलाइज होगा. इट विल बी रियलाइज्ड, इन्फ्लेशन नीचे आएगी. सो दे आर होपफुल दैट व्हाट दे आर डूइंग is working as per their standards. So that's a dovish sign जो कि गोल्ड और बिटकॉइन को बूस्ट करेगा. फिर उसने ये कहा है कि फेड की जो प्रोजेक्शंस है वो प्लान्स या डिसीजंस नहीं है, दे आर डेटा ड्रिवन. तो एज डेटा नीचे आता जाएगा मार्केट ऊपर जाएगी बिटकॉइन गोल्ड की. और The third thing जो उसने डविश कही है वो ये कही है कि जो वो मीटिंग बाय मीटिंग they are going to take the decisions again. So they are very much flexible. They are again as they always say that they are data driven. So जो data आएगा उसके हिसाब से they are going to move up in the meeting from time to time, but really the focus was on what to do today. I would say about July 2 things. One, decision hasn't been made. Two, I do expect that it will be a live meeting. So yeah, उसको प्रेस ने ये पूछा कि कोई डिसीजन तुम लोगों ने ले लिया हुआ है फॉर द नेक्स्ट हाइक. तो उसने कहा है कि देयर इज नो कमिटमेंट और हम लोग डिसीजन अभी हम लोगों ने कोई नहीं लिया. वी आर गोना सी हाउ इट गोस. आई मीन अगेन द डेटा ड्रिवन थिंग. Little shift in the dots. इस पे बिटकॉइन Stronger GDP, less of a hit to unemployment, slower progress on inflation, and I'm wondering in this sort of where's the disinflation coming from? Sure. The labor market's going to be stronger. It looks like this question is very important. Demand's not coming down all that fast according to GDP. You've doubled your estimate of GDP. So what's the narrative here? It seems like it's getting more immaculate rather than a little messy. So you're right that the data came in, I would say, consistent with, but on the high side of expectations. So, and if you go back to the former SEP, the last SEP in March, you will see that growth moved up. These are not huge moves, but growth estimates moved up a bit. Just because इसने कहा कि there is no commitment to move interest rate in July, it's a very very dovish sign. हम लोग Bitcoin green देखेंगे, gold green देखेंगे, USD red देखेंगे. That perhaps more restraint will be necessary than we had thought at the last meeting. So, although the level, frankly, is pretty, the level of 5.6 is pretty consistent if you think about so it. Far, where yes, the federal funds rate was trading before the bank incidents of. वकास, आप views read करो, आपके लिए आ रहे हैं comments. And, I don't think the story has really changed. The committee has consistently. आप क्यों नहीं ट्रांसलेट कर रहे? मिस वकास को करने दें यार. मेरे पास लाइव नहीं है, मैं ज्यादा कवर नहीं करता. अफशीन को ज्यादा प्रैक्टिस है इन चीजों की. अफशीन को ज्यादा शौक है. अफशीन को ज्यादा शौक है इन चीजों का. मैं अपना पेपर वर्क साथ साथ कर रहा हूँ. इन्होंने मुझे किसी और काम में लगाया हुआ. Healing and supply side conditions. They've definitely improved a substantial amount, but if you talk to people in business, they will say it's not back to where it was. So that's one thing, and that should enable goods prices to continue, goods inflation to continue to come down over time. In terms of housing services inflation. यार इस तरीके से नौसर नेम इस तरीके से मार्केट नहीं पंप डंप करती है. पाउल जो बातें कहेगा, ठीक है, उसके हिसाब से अभी प्रॉफिट टेकिंग और पोजीशंस ओपन हो रही, तो इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग चल रही है इसकी स्पीच के इसके अल्फाजों पे. जब ये बात पूरी कर लेगा फिर खबरें आएंगी, प्रेस कंक्लूड करेगा, इसके एक वर्ड को एनालाइज किया जाएगा, फिर जर्नलिस्ट अपनी बात लिखेंगे, अपने व्यूज देंगे, एनालिस्ट, उसके बाद मार्केट नेशनल मूव करना. इसलिए मैं कहती हूँ कि जब ऐसे इवेंट्स हो तो एटलीस्ट 4 आवर्स वेट करो एक ट्रेंड को स्टैब्लिश होने, तो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड एंड देन गेट इनटू विद योर फ्यूचर्स ट्रेड्स इफ यू आर अ फ्यूचर ट्रेडर. तो इस तरीके से नहीं होगा. इट इज मूविंग एक्चुअली. उसकी बातों पे तुम देखो ग्रीन रेड कैंडल्स बन रही हैं. बट एटलीस्ट एक कंक्लूसिव, एक डिसाइसिव हम लोग को ट्रेंड मिलेगा 4 आवर्स आफ्टर. I would say in a number of the parts of that sector, the largest cost would be wage costs. It's the service sector, so it's heavily labor intensive. And I think many analysts would say that the key to getting inflation down there is to have a continuing loosening in labor market conditions. Overall, Fed is which hawkish. We have seen. We have actually seen. Overall, Fed is hawkish, which should bring Bitcoin and gold down. अगर कोई gold में भी है यहाँ पे तो इसको. I would almost say that the conditions that we need to see in place to get inflation down are coming into place, and that would be growth meaningfully below trend,
it would be a labor market that's loose. What am I expecting? I'm expecting red Bitcoin. It's getting healthier So and healthier far. and that kind of thing. The things are in place that we need to see, Thank you, but the Rahul. process of that. That actually is a very good idea, Rahul. Thank you so much. Okay, now this question is very, very important. Nick He's a Timmer, Fed the Wall Street insider. Journal. Nick, Chair Powell, what's the value Nick. in pausing and signaling future hikes this is versus a very important question. just hiking now? I mean, not to be flippant, but I don't lose weight just by buying a gym membership. I have to actually go to the gym. 16 of your colleagues put down a higher year-end 23 rate today. A majority of you think you're going to have to go up by 50 basis. यार मैं रेड कहूंगी ग्रीन कहूंगी मैं कॉन्स्टेंटली स्वैप करती रहूंगी एज पर व्हाट जो वो कहेगा मैं उसके हिसाब से रेड ग्रीन करती रहूंगी कहती रहूंगी उसके बाद 4 घंटे बाद मार्केट खुद एक डिसाइसिव ट्रेंड देगी देन वी आर गोना सी रेड और ग्रीन सो फार 4 hours बाद आई एम सीइंग रेड बिटकॉइन डिड यू गेट इट because it's not me who's moving the market. I'm literally listening to him and I'm just translating your hawkish or dovish and I'm saying your red or green candle. So I'll keep swapping. I'll keep switching. In terms of speed, it's what I said at the beginning, which is speed was very important last year. As we get closer and closer to the destination, and according to the SEP, we're not so far away from the destination in most people's accounting. It's reasonable, it's common sense to go a little slower, just as it was reasonable to go from 75 basis points to 50 to 25 at every meeting. And so the committee thought overall that it was appropriate to. So what Powell has so far said as to this सवाल का जवाब उसमें वो ये कह रहा है कि it was appropriate to moderate the pace यानी कि moderate यानी कि pace को इनकी speed को interest rate high की speed को थोड़ा सा कम करना was moderate slightly it was moderate it was appropriate that's what they have done but that means it's hawkish that means कि 1 या 2 interest rate hike मजीद इस साल में होंगे which means कि Bitcoin will be red. Turmoil that we've seen, it would be early to see those, but we don't know what the extent is. We'll have some more time to see that unfold. I mean, it's just the idea that we're trying to get this right, and this is if you think of the two things as separate variables, then I think that the skip, I shouldn't call it a skip, the decision Perfect. Makes sense. I know you said July is live with only one June employment, with only the June employment and the CPI report for June. Due to be released before the July meeting, you get the ECI after, you get the senior loan officer survey after, you get some bank earnings at the end of next month. What incremental information will the committee be using to inform their judgment on whether this isn't? So far Powell ने ये कहा है कि as I said कि it was appropriate कि moderately pace को interest rate high की pace को थोड़ा सा हम लोग slow down कर लें moderately ये hawkish इसका मतलब है कि ये लोग आगे जरूर interest rate बढ़ाएंगे maybe 1 maybe 2 फिर he says कि it is appropriate to slow down as we approach the destination which means कि इनकी जो interest rate को बढ़ाने की इनकी जो inflation को bring down करने की जो उनकी destination है that is they are approaching that which is a dovish. Then he says that he shouldn't call it skip and he's not skipping the interest rate hike which means कि they will increase the interest rate hike. And then he had hinted कि मजीद hikes आएंगी red Bitcoin. And he's consistently stressing कि अभी कोई decision नहीं लिया गया है to increase the interest rate hike in July. August में FOMC की meeting नहीं scheduled होती है which is weakening US dollar which is strengthening Bitcoin. Has changed to make you think that the economy is a lot more resilient and inflation is going to be a lot more stubborn? And given that, why do you feel confident that this is as high as you're going to have to revise the federal funds rate, or do you think it's possible we could have even a higher than 5.6% terminal by the end of this cycle? I mean, on the first part, I just think we're following the data and also the outlook. The economy the labor market, I think, has surprised many, if not all, analysts over the last couple of years with its extraordinary resilience, really. And it's just remarkable. And that's really, if you think about it, that's what's driving. It's job creation. It's wages moving up. It's supporting spending, which in turn is supporting hiring. And it's really the engine, it seems, that is driving the economy. So it's really the data. In terms of, we always write down at these meetings what we think the appropriate terminal rate will be at the end of this year. Bitcoin यहीं पे consolidate करके यहाँ से rebound कर जाएगा. I think so far. क्योंकि Fed बार-बार ये बात कह रहे हैं कि हम लोगों ने जुलाई में interest rate hike का कोई commit नहीं किया हुआ. हम लोग data देखेंगे and then we're going to decide. Which means कि मार्केट को बहुत अच्छी होप दे रहा है एक ग्रीन होप दे रहा है मैं बिटकॉइन की बात कर रही हूँ यहाँ पे क्रिप्टो की बात कर रही हूँ यहाँ पे
तो we should see greener Bitcoin. However, अभी जो वो ये बातें करेगा उसकी बेस पे पूरी मार्केट मूव करेगी. It will be data driven. I can't tell you that I ever have a lot of confidence Gold that we is can getting see greener, where the Bitcoin भी federal green funds करना rate चाहिए will फिर. be that far in advance. Bitcoin को भी green होना चाहिए. We'll see. Mr. Chairman, thanks for taking my question. Thank you, of course. Thank you You had so said much. back at the end of May that you thought risks were getting closer to being into balance. Is that still the case, or has your mind changed about the balance of risks out there? How red And we also, can see could you not give much. us an idea of ज़्यादा नहीं what होगा. would be a sufficiently restrictive funds rate? Obviously the current rate, according to the committee, is not sufficiently restrictive. Is it 5.6? Is it 6? Where is it sufficiently restrictive? Thank you. I would say again that I think that over time, the balance of risks, as we've moved from from interest rates at effectively zero now to 5 percentage points with an SEP calling. Okay, one thing हम लोग conclude कर सकते हैं so far कि there is no much speculative interest in Bitcoin in US dollar. तो Bitcoin के लिए good है. मेरे ख्याल से 4 घंटों के बाद हम लोग एक दोबारा से uptrend देखेंगे Bitcoin का. But we'll see. Let him finish the conference first. Getting closer to being in balance. I still think, and my colleagues agree, that the risks to inflation are to the upside still. So we don't think we're there with inflation yet, because we're just looking at the data. If you look at the full range of inflation data, particularly the core data, you just aren't seeing a lot of progress over the last year. Headline, of course, inflation has come down materially, but as you know, we look at core as a better indicator of where inflation overall is going. Sufficiently, so I think what we'd like to see is credible evidence that inflation is topping out and then beginning to come down. एक और बात उसने जो Davish की वो ये कही कि he said that we have moved much closer to sufficiently restrictive, यानी कि interest rate बढ़ा के जो almost साल से बढ़ रहे हैं, so they are much closer to their destination, which is a dovish sign, which means that they are getting more confident कि जो इनकी interest rate increase की policy है, it's working to bring down the inflation, which means greener Bitcoin. तो जो मैं बार-बार कह रही हूँ कि summer rally में expect कर रही हूँ, July August में summer rally में expect कर रही हूँ, मेरी उस expectation को ये बात back करती है. So we'll see. Of sufficiency, more with more data over time. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. I wanted to ask further on the lag effects. When you're considering when you would Russians are very big on crypto anyway. Throughout the course of the year, are there things that you would expect to kick in as those lag effects come into effect that would inform your decisions? Have you learned things over the past year that give you some sense of timeline for when to expect those lags to come into effect? Yeah. So it's a challenging thing in economics. It's sort of standard thinking that monetary policy affects economic activity with long and variable lags. Of course, these days, financial conditions begin to tighten well in advance of actual rate hikes. So if you look back when we were lifting off, we started talking about lifting off. By the time we had lifted off the 2-year, which is a pretty good estimate of where policy is going, had gone from 20 basis points to 200 basis points. So in that sense, tightening happens much sooner than it used to in a world where news was in newspapers and not on the wire. So that's different, but it's still the case that what you see is interest-sensitive spending is affected very, very quickly. So housing and durable goods and things like that. But broader demand and spending and asset values and things like that, they just take longer. Yeah, Chinese and Russians are too big on cryptocurrencies. They're very progressive. I think they are more of a futuristic people as compared to US and UK. I agree. So we're looking at the calendar. We're looking at what's happening in the economy. We're having to make these judgments. And again, it's one of the main reasons why it makes sense to go at a slightly more moderate pace now as we seek that ultimate. I can't point to that ultimate endpoint. I can't point to a specific data point. I think we'll see it when we see inflation, really, really flattening out reliably and then starting to soften. I think we'll know that it's working. And ideally, by taking a little more time, we won't go well past the level where we need to go. I was curious if you could give us an update on what you're seeing on credit tightening since. एक और उसने जो dovish statement दिया that is going to make Bitcoin green वो ये है कि जो broader demand है वो takes time.
to moderate. So there's no certainty कि कितना लंबा इस time को लगेगा, like inflation को नीचे लेकर आने में कितना time लगेगा. That's what he's saying. So he's not committing. Basically, he's not committing, which means the market will be hopeful because they are still expecting the market will, money printing will go on. Money printing machines chalengi. So yeah, that's how we think about it. Resistance. Thanks, Chris Rugaber at Associated Right, Press. well. You mentioned that many of the trends are in place that you want to see. Core services ex housing has come in pretty low in the past couple of months. Chinese market has no influence on the market. Are you serious, Saeed Nas? You're talking the opposite. And then we've had some quirks in used car prices. So given that these trends are in place, I guess I'm sort of asking the flip side of Nick's question. Why signal additional rate hikes? Aren't things headed in the direction you need? Why not simply give it even more time? Or it's surprising to see so much hawkishness in the dots given what we're seeing recently. Yeah, so we're एक और बात इसने hawkish की है, which is going to bring Bitcoin down. वो ये कह रहे हैं कि when we see inflation flattening and softening, we will know that the tightening is working. So they want inflation to flatten. They want inflation to go more down, softer, but it's not happening as per their standards, as per their parameters. So this is a hawkish tone. और इसका मतलब ये भी है कि they're waiting for inflation कि it falls down before they can actually stop. So again, he's saying that जो उनकी forecast है, projections है, that can go wrong. So they will see as the market, as the data comes. We want to see it moving down decisively. That's all. Of course, we are going to get inflation down to 2% over time. We don't want to do. We want to do that with the minimum damage we can to the economy, of course. But we have to get inflation down to 2%, and we will. And we just don't see that yet. So he just said कि वो ज़्यादा progress नहीं देख रहे हैं core PCE की, which is a hawkish tone. और आप लोग जो कह रहे हो कि चाइनीज मार्केट का इन्फ्लुएंस नहीं है मार्केट में, मेरे ख्याल से मेरा राय इसकी बिल्कुल ऑपोजिट है. चाइनीज का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है मार्केट के अंदर, बिकॉज चाइना के अंदर चाइना इज़ नंबर 1 और नंबर 2 बिटकॉइन वेल, और चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा बिटकॉइन माइनिंग होती है. तो इन माई ओपिनियन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है. हाउएवर इट्स द ग्लोबल इकोनॉमी जो कि फेवर नहीं कर रही है risky assets के अंदर investment. Just a little more specifically of how you see the tight labor market driving inflation at this point. Thank you. Right. So I'm not going to comment on any particular paper, but I would say that I think the overall picture is that at the beginning, in early 2021, inflation was really coming from very strong demand largely for goods. People were still at home. सईद नाज, अगर क्रिप्टो की मार्केट सिर्फ यूएस मार्केट को देख रही होती ना, तो जो बाइनेंस का फंड आया था इससे बिटकॉइन 20,000 का हो चुका होता. ठीक है. सो दैट्स नॉट ट्रू. इट्स अ ग्लोबल मार्केट. यूएस मार्केट का इन्फ्लुएंस है, बिल्कुल है. चाइनीज मार्केट का इन्फ्लुएंस नहीं है. दैट्स नॉट ट्रू. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. Through 21 into 22 and now in 23, I think many analysts believe that it will be important. जिन लोगों ने अभी तक हम लोगों को टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया, प्लीज टेलीग्राम पे ज्वाइन करो फॉर कांस्टेंट अपडेट्स, फॉर कांस्टेंट एनालिसिस ऑन बिटकॉइन. मेरे या वकास के बायो में से जाके लिंक ले लो एंड डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम. हम लोग वहाँ पे फ्री सिग्नल्स भी पोस्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्केट. फ्यूचर सिग्नल्स, स्पॉट सिग्नल्स भी वहाँ पे हम लोग फ्री में पोस्ट करते हैं. सो डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम. वकास के या मेरे बायो में लिंक में से ले लो तुम लोग. Paper with Blanchard of a few weeks ago, which is very consistent with what I would think. Exactly. I agree, Rob. Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. You said in the past that you don't like to surprise markets. It's kind of been the Fed's view. Markets should have an idea of what you're going to do before you go in. You also said a number of times. Can you see Green July? I'm still expecting Green July. To bring inflation down, you reiterated name that 600 again today, and that we क्या हाल है आप लोगों का? हम लोग बिल्कुल ठीक है. अहमद मोहसिन आप कैसे हो? Thank you so much. So I'm wondering, as we go into the next meetings, how Wall Street or others should look at your reaction function. What will you be reacting Yes, I think gold should go up. Time or data? In other words, if nothing Although much I'm not changes, a gold expert at all by any looking at the means. same sort of labor market, the same sort of I think there will be a mini summer levels rally in July or in September. Fee says $100 or November. USDT per month. Will you move because you've said you feel you need to? So there are two versions, premium and free. You can join free. If you don't want to join premium, join free. I'm not selling my premium memberships here. What I'm trying to build a community. So we of course we don't go out of our way to surprise markets or the public.
At the same time, our main focus has to be on getting the policy right. And that's what we're doing here. And that's what we'll do for the upcoming meetings. I will say the July. Well, we're looking ahead to the Federal Reserve's. The data, you'll hear Fed people talking about it, and markets will have to make a. Thank you, Akbar. Thank you so much. Do you think inflation is likely to continue coming down based on the lags and based on your threat of additional movement? Or are we going to be in a period where we're not going to know what's happening? Look at, XRP hold crew में look at भी long term के लिए the hold कर सकते हैं. forecast. So inflation is running. Inflation is running at about 4.5, a little higher than 4.5%, and the median FOMC participant thinks it'll go down to 3.9. So that's expecting pretty substantial progress. That's a pretty significant decline for half a year. So that's the forecast. You know, we do try to be transparent in our reaction function. We're committed to getting inflation down, and that's the number one thing. So that's how I think about it. Victoria Guido with Politico. Could you talk about the balance sheet and how you're thinking about it? What are you looking for to judge whether we're approaching reserve scarcity, and is Treasury issuance going to affect that? Also, are you considering lowering the RRP rate in order to take some pressure off banks? नहीं मैं घर पे ऑफिस में नहीं. First of all, on the Treasury part of it, I can talk about that. आपकी सोर्स बाय कर सकते हैं. Balance sheet. So on that, of course, we've been very focused on that for a couple of months, as everyone has. Treasury has laid out its borrowing plans publicly. I think we all saw it. I saw the Secretary's comments yesterday to the effect that Treasury has consulted widely with market participants about how to avoid market disruption, and that they're going to watch carefully for that. So that's from the Treasury, which actually sets the borrowings. At the Fed, we'll be monitoring market conditions carefully as the Treasury refills the TGA. The adjustment process is very likely to involve both a reduction in the RRP facility and also in reserves. It's really hard to say at the beginning of this which will be greater. We are starting at a very high level of reserves and still elevated RRP to take up, for that matter. So we don't think reserves are likely to become scarce in the near term or even over the course of the year. So that's the Treasury part of the answer. We will, of course, continue to monitor conditions in money markets, and we're prepared to make adjustments to make sure that monetary policy transmission works. Was there another part of your question? Yeah. What are you considering lowering the RRP rate to help take some pressure off banks? So we have a number of. I would say the RRP doesn't look like it's pulling money out of the banking system. It's actually been shrinking here lately. So I don't think that's.